Hello everyone. Welcome back to Markets at 360. Again, a very choppy day for the markets as such. So there is nothing much to discuss about the markets movements. But yes, what we are going to discuss is where the movement is, because primarily we are bulls, and we would like our investments to first buy and then sell. So हम sell तो है नहीं. So let us straight away go to the charts so that it will be easier for you to understand कि markets में movements कहाँ पे हैं. As far as the indexes are concerned, there is absolutely no movement. Nifty and Sensex both कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं. बट अगेन द एडवांस डिक्लाइन रेशियो और जिस तरह के स्कैनर्स हम लोग देखते हैं वहां पे काफी कॉशियसनेस है. सो अगेन what I would like to suggest to the traders or let's say to the swing traders that अपनी जो पोजीशन है वो लाइट रखिए और प्रॉफिट बुकिंग जो है वो रेगुलरली कर लीजिए, बिकॉज देर विल बी टाइम्स के जब अगर मार्केट्स में ऐसे कंसोलिडेशन है या ऐसे मूवमेंट्स हैं तो आपको शायद वो ब्रेकआउट्स या ब्रेकआउट जनरली फेल होते हैं. So generally in these kind of markets, any breakout which you think as a breakout will fail. Secondly, the reason again, what I understand in a very common sense and normal way is आपका Brent जो है that is again touching 90, and because of that कहीं ना कहीं markets are just seeing what where to go, whether up or whether down, or basically it's kind of boring and a consolidating market. तो जब तक ये ब्रेंट में कुछ सब्सटेंशियली या तो बढ़ ना जाए तो मार्केट गिरेगा, और अगर गिर जाता है ब्रेंट तभी मार्केट वापस कुछ तेजी बन सकती है, ऐसा अजम्पशन हम करके चल रहा है. लेट्स से अबाउट द स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स. फ्यू ऑफ द स्टॉक्स हमने कल भी डिस्कस किया था. 3-4 दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं. आई थिंक एशियन एनर्जी इज particularly one stock that has given a very good मोमेंटम आफ्टर इट्स अर्निंग्स. और अर्निंग्स भी ठीक ठाक आई थी. हमने जब लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था तब भी हमारा एशियन एनर्जी पे काफी पॉजिटिव रुझान था. सो दिस इज अगेन अर्निंग के साथ में अगर प्राइस विजिबिलिटी आ रही है, अर्निंग मूवमेंट आ रहे हैं और अर्निंग मूवमेंट के साथ में प्राइस मूवमेंट्स भी आ रहे हैं, दैट मीन्स the company is absolutely in right direction as far as the normal opinion of the market is concerned. So this is where most of the action is as far as a stock specific thing is concerned. Now, uh, अगर आज इंटरेस्टिंगली दो नए सेक्टर देखने को मिले. नो, इसको मैं सेक्टर नहीं बोलूंगा बट सेगमेंट बोलूंगा. सो पहला सेगमेंट जो है वो आईपीओ सेगमेंट है. अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखें, दिस इज धोत्स चार्ट. जहां से लिस्ट हुआ वहां से ये स्टॉक 40-50% का इसने रिटर्न दे दिया है विद इन 3 days, बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ सेक्टर विच इज इन वेरी मच अपट्रेंड. और मार्केट ने जो प्राइसिंग किया था, एक्चुअली द कंपनी ने जो अपना प्रोडक्ट अपने शेयर्स का जो प्राइसिंग किया था, दैट वाज very reasonable according to the markets, and that is why you can see the kind of uptrend that the stock is uh, being enjoying for a period of time. मतलब 3 दिन में ही स्टॉक 40-50% जैसा रिटर्न दे चुका है. दूसरा इंडो एमआई, ये तो नीचे से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है. सो 485 से ऑलरेडी, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, 240 करोड़ का पैट आया है, एंड विद इन नेक्स्ट 2 years द कंपनी विल बी अर्निंग 1000 करोड़ पैट. Now, 1000 crore that pay, you just put in a number and you will get whatever other theoretical what you want to give. And you can get a sense के what kind of wealth it can create. और इस तरह के stocks को whenever there are bad times in the market and when you get the stocks at lower level, kindly buy it. Milky Mist. So Milky Mist again it's a IPO stock. अपर सर्किट में ही चल रहा है. आज एक बिहारी लाल करके एक और कंपनी पे लिस्ट हुआ है, दैट इज ऑल्सो 35-40% का प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है. दैट इज अगेन वेरी गुड. टेक्नोक्राफ्ट. सो टेक्नोक्राफ्ट इज येट अनदर आईपीओ स्टॉक जो 2-3 दिन पहले लिस्ट हुआ था.
which is giving a good directional return again. And Ship Rocket. So Ship Rocket इसका एक बार थोड़ा सा छोटा चार्ट और दिखा रहा हूँ सुबह ग्रीन. So so this is how the stock actually has performed in today's time. If you see, ऑलमोस्ट 40% जैसा रिटर्न आ गया था. और यहाँ पे इफ यू हैव सोल्ड एट द हायर लेवल, आपको 50% जैसा रिटर्न भी देखने को मिला होगा. सो दिस इज आप एज फार एज मार्केट्स आर कंसर्न, एज फार एज आईपीओज आर कंसर्न, वहाँ पे एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. सो यू गाइस कैन हैव अ वेरी डीप लुक अबाउट द सेम. अच्छी कंपनियों को पढ़िए, समझिए, एंड जस्ट ट्राई टू build your thesis over that. And so upcoming IPO में what we like the most is uh, Thomson Instrument. Now I would rather recommend just go out and subscribe to this like anything. This is obviously going to open from tomorrow till 24. So this is very very exciting. Although this is not very बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन this is the only company in India which have a monopoly market in scanners, so heat scanner or thermal scanners. Now this is amazing company, and one should definitely look for listing in at least. ग्रे मार्केट में भी 35-40% का प्रीमियम ऑलरेडी दिखा रहा है. आईपीओ का साइज छोटा है, सो मे बी इट कैन बी अ luck factor or something like that. But I think 15,000 जो छोटी वाली एप्लीकेशन है एज ए रिटेलर, वो तो लगानी ही चाहिए इस तरह के आईपीओ में. और हो सके इफ यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कीप होल्डिंग इट फॉर foreseeable future. Let us talk about one more sector which was today rocking. हालांकि आई वुड नेवर इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर, बट ठीक है. If anybody has that sort of commitment and that sort of understanding about the sector, I think you can invest, but I would rather say with very cautious tone that kindly invest at your own peril, and in and out बहुत जल्दी करना पड़ेगा because ये commodity play है. सो आज अगर लोग शुगर इंडस्ट्री देखें, शुगर इंडस्ट्री के सभी स्टॉक्स, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स वर थ्रॉबिंग लाइक एनीथिंग. बजाज हिंदुस्तान देख लीजिए, द्वारिकेश शुगर देख लीजिए, इट वाज 9%, इट वाज 8%. दिस पॉनी शुगर वाज 7%, 8% odd. हर एक शुगर स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला. दालमिया शुगर, धामपुर शुगर, Simba Sugar, Awadh Sugar, उत्तम शुगर, रेणुका शुगर, एवरी शुगर स्टॉक से ये तीन चार जो पीछे के स्टॉक्स हैं. बाला बलरामपुर चीनी है, उगार उगार शुगर है, आंध्र शुगर है, ये सब ठीक है, नहीं चले. बाकी सारे शुगर स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी है. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है तेजी क्यों है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि पिछले कुछ टाइम में the sugar prices have skyrocketed by 40%, and that is why these stocks are performing. I am not very sure क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, but I am just putting the भाव in front of you. किसी को अगर देखना है, किसी को अगर चार्ट समझ में आता है, किसी को अगर ट्रेड समझ में आता है, किसी को अगर सेक्टर समझ में आते हैं, तो you can go now and into the stocks. Rather, मैं इन स्टॉक्स में कभी पैसे लगाता हूँ ना, मैं, क्योंकि आई एम इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग or let's say understanding the pulse of these kind of commodity, and I am unable to measure the momentum of these kind of commodities. ना मेरे पास ऐसा कोई रास्ता है जहाँ पे मैं रेगुलर शुगर स्टॉक के भाव को चेक करूँ. बट दिस इज जस्ट आई एम डिस्प्लेइंग इट जस्ट बिकॉज किस सेक्टर में और मार्केट के किस सेगमेंट में कहाँ पे तेजी बनी हुई है उसको देखिए. सो आज के लिए आई थिंक इतना ही है. कल के लिए मार्केट में ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है. सो यू वुड अगेन रिपीट व्हाट आई वाज रिपीटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो. बी कॉशियस, ट्रेड कॉशियसली, बिकॉज मार्केट में अभी कंसोलिडेशन जोन है. क्रूड पे नजर रखिए. क्रूड अगर नीचे आता है, आई थिंक मार्केट तक नहीं चलेगा. मार्केट उसके पहले शायद नहीं डायरेक्शन तय करेगा. So keep that in mind, and
See you tomorrow. Thank you very much.